वैसे you've been a Khan Saab supporter for a very long time. तुम्हारा तो दिल टूट रहा होगा अभी. Actually, I've not been a supporter for him for the longest time. But you voted for him, no? I did vote for him on the PTI in the National Assembly, not the provincial. Provincial तो मैंने independent को दिया. So you know he's out now, ना? There's no way he can. अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. Khan Saab is out. He seems to be more, conscious about sticking around for a while. अच्छा really? क्या मतलब? No. He has accepted the Supreme Court's decision and everything. हाँ, but Supreme Court ने कहा ना आत्म एतमाद होना चाहिए. There's an English saying that there's many a slip between the cup and the lip. So what does that mean? I don't know. No cup and his lip. What does that mean? So when you're about to drink tea, things can slip and spill and stuff like that. अच्छा. The idea is that there can be many paths to take between the. What's an NRO? I've heard that all corrupt people can claim the NRO, which was the strangest thing to me. It's just a term given now because there was an amendment or a constitutional thing that was given to Benazir Bhutto and PPP and PMLN by Musharraf when the US bartered National Reconciliation Ordinance. So reconciliation, bring everyone together on one page. पुरानी चीजें भूल जाओ, आगे चलो. Sounds great. 18th Amendment. So it grants amnesty to politicians, political workers, and bureaucrats who were accused of corruption. So basically, it's a way out for everybody who's been. So basically, whoever made shitloads of money in the 90s suddenly gets to keep the money in the. I wonder who's on the list here of NROs. Asif Ali Zardari is number one. Achha, so beneficiaries include Asif Ali Zardari, Benazir Bhutto, another Zardari. There's a Nawaz Sharif in there too. So yehi hoga NRO. So pretty much so then the same story has been repeating itself is what I'm trying to say. So this is what he's been claiming कि जी NRO ये मुझसे चाहते हैं और मैं नहीं देने को तैयार. और seems like he might be right. Who knows? He might be lying. I mean, he's a politician. I'm not saying कि कोई दूध का धुला है. मगर common sense की बात की जाए तो I'm sure they didn't like the fact that he's an outsider he's not from the system. He just doesn't. Technically, अभी तक they're claiming कि जी corruption की है, but अगर इमरान खान पे असल में corruption charges तो 3.5 साल में ये लोग उसकी बजा चुके होते हैं. corruption की है. बुज़ार ने corruption की है, इसने corruption की है. उस personally वो कभी नहीं कहता कि इमरान खान ने corruption की. अब कुछ कहना है कोई तोशा खाना केस है उस पर हम उसको बजाएंगे. होगा नहीं है मुझे who knows. वो तो जब आएगी तो देखेंगे. मगर even the people who are against Imran Khan kind of understand that this guy is not personally corrupt. Might have a team that's corrupt, might have people who are working under him who are playing the system and trying to make money on the side. Sure, I'll accept. हो सकता है. I mean, when you have a parliamentary system, you have to choose a team from the parliament, right? So the people who come into power are the corrupt with that kind of nation. Yeah. And we have that kind of electoral system. हाँ. एक election के करने में 2, 3, 4, 20 करोड़ I don't know, मैंने कभी किया नहीं, but डिपेंड्स. कोई लोग कहते हैं कि जी वो जो लोकल लेवल का होता है उसमें 2-4 करोड़ लगते हैं. जो आपको MP वगैरह होता है उसमें 10-12 लगते हैं. 20-30 करोड़ तो कम से कम लगते हैं. वाला होता है उसमें 20-30 करोड़ लगते हैं. तो चढ़ते हैं. उसमें टिकट लेने के लिए पार्टी को फंड देना पड़ता है ना. कि भाई पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? आप पहले डिपॉजिट तो करो ना कुछ पैसे पार्टी के फंड में. अब वो पार्टी फंड का क्या करती है वो एक और आर्ग्यूमेंट है. मगर पॉइंट बीइंग इज कि इट्स if you're spending 30 crore rupees to become a legislator in the government, what kind of sustainable business model does exist to continue that cycle? I mean, there's no donation system in Pakistan. जिसमें अमेरिका में ऐसा होता है ना कि भाई पार्टीज को डोनेशंस आती हैं तुम मैं जैसे पब्लिक से, तो या कांग्रेसमैन को डोनेशन आती है सुपर पैक से लेके इंडिविजुअल्स तक. जो बर्नी सैंडर्स की बड़ी बात थी कि यार उसको $50 उसकी एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन का साइज $50 था. सर नहीं मुझे नंबर याद नहीं, बट पॉइंट बीइंग बहुत छोटा था. हाँ, बट आई एम श्योर वो भी स्पेशल इंटरेस्ट लॉबीज. सो सुपर पैक्स आर दोज, राइट? What are super PACs? So basically a collective of special interest lobby groups that fund a shitload of money into some congressmen's... exactly. So they're thinking of their profit and estimating it based off of the policies and how that will affect it. The issue of American politics is that big lobbies fund so much that the congressman doesn't really answer to the people per se, he answers to the lobbyists. And that's the critique of that system. And that's why Bernie Sanders was supposed to be the he's kind of और इसीलिए शायद वो elect भी नहीं हो पाया. और कभी नहीं हो पाता वो. उस एंड तक पहुंचता उसको क्या कहते हैं यार, एस्टैब्लिशमेंट. उधर की एस्टैब्लिशमेंट कहती है साइड पे यार क्या कैसी बात कर. हाँ. और फिर उस पॉइंट पे कहता है हाथ आगे आ रहा है मुझे पता है लेकिन कोई मसला नहीं है. क्या मसला है? कोई मसला नहीं. खैर है, इसको नेचुरल जाने दिया करो यार. इसमें नहीं आप कंट्रोल कर सकते हो. जबरान नासिर के भी 6 दफ़ा हाथ आए थे. उसके तो यूं करके हाथ आ रहे थे.
उसके बीच में बड़े ये कौन ऐसे तो कोई उसके ऐसे तो मैंने कोई हाथ नहीं देखे भाई, ये तो नरगिसी डांस हो रहा था यहाँ पे तो। आई थॉट जब वो कुछ विमेन एम्बियनेस की बातें करना शुरू हुआ था। ये पता नहीं कहाँ से तुम्हें फील हुआ, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जज्बाती तो जरूर है, जज्बाती आदमी जरूर है, बड़ा शरीफ इंसान है with his ponytail। हाँ वो बहुत जज्बाती आदमी है, बट हाँ, so I mean it's the same game, I guess this was a different player. Yeah, it's a different player, and it's interesting to see regime change actually. It is, I mean, anyone who says कि नहीं हो रही पाकिस्तान में is stupid idiot. आप support कर सकते हैं कि हमें अमेरिका के साथ रहना है, दुनिया की सुपर पावर है, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। Do you believe this whole खत वाला thing कि यार खदशत का तो मतलब जब तक कोई देखेगा नहीं पता नहीं लगेगा, और टॉप सीक्रेट है, वो नेशन सीक्रेट है, वो नहीं देख सकते। सही बात भी है, मतलब गलत बात नहीं है। दुनिया में यूजुअली डिप्लोमेटिक केबल्स आर केप्ट सीक्रेट टिल अ लॉन्ग टाइम बिफोर, एंड विकीलीक्स की सारी प्रॉब्लम ये थी, उस बेचारे जूलियन असांज को पकड़ के सुतरी बजाई हुई है, उसी वजह से बजाई हुई है कि भाई तूने हमारे सीक्रेट कम्युनिकेशंस को पब्लिक क्यों किया और प्लेटफॉर्म क्यों दिया। फ्रेंकली स्पीकिंग उसने चोरी नहीं किया, उसको तो किसी ने दिया था, तो ही जस्ट मेड समथिंग दैट वाज गिवन टू हिम पब्लिक, बट देव गॉन आफ्टर हिम, एंड देव गॉन आफ्टर हिम वेरी severely over the years. Yeah. And that's true. I mean, it's against diplomatic norms to make such things public. Fine, except that there is some kind of diplomatic norm. Magar to say कि जी अमेरिका regime change नहीं करता is just like, are you serious? हाँ, लेकिन इस केस में क्या वो हुआ था कि नहीं हुआ था? अब वो केसेस चलेंगे forever. Now that's the question. अगर I agree कि जी हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैसेज आया था या जो endorsement आई थी उसमें ये था कि जी there's untoward language undiplomatic language being used by that diplomat, and this was tantamount to meddling in our internal affairs. Have you seen Taimur Rahman's understanding of what that letter that he shared is? I have not. So basically there's nothing in that letter, and he's basically broken it down कि खान साहब आपने कहा कि ये होगा, तो उसमें तो खाली एक सजेशन लिखी हुई है कि आप लोगों को वोट करना चाहिए है, और वो भी सजेशन के तौर पे लिखा हुआ है। सो की तकरीर से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ। आपके सामने चंद वजूहात, चंद सवालात रखूंगा, आप ही शायद उनका बेहतर जवाब दे सकें। चलो हम मेरा देखते ये हैं। ख्याल था कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिप्टी स्पीकर ने गलत किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बाहर फेंक करानी चाहिए था, असेंबलियां जो तहलील हुई सदर साहब ने जो की वो भी गलत था, इतना बड़ी तारीखी फैसला वगैरह वगैरह, कि खान साहब जो है वो कुछ ऐसा बम छोड़ेंगे अपनी तकरीर के अंदर कि जिसके नतीजे में तहलका मच जाएगा और हम हिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि खान साहब क्या एविडेंस है आपके पास कि जो अपोजिशन है उसने बोरियां, जैसे कि आप कहते हैं, पैसे की कबूल की हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से? पेपर ट्रेल का है, मनी ट्रेल का है, आपने प्रेजेंट ही नहीं की। आपने सिर्फ दो चीजें अपने फेवर में कही, एक तो आपने वही बात की कि जी लेटर है, और दूसरा आपने ये कहा कि जी वो विजिट करते रहे एम्बेसी को। विजिट करने से शुरू करते हैं, विजिट तो बहुत लोग करते हैं जी एम्बेसी को। आपको शायद 22 साल हो गए सियासत में, आपको शायद पता नहीं तजर्बा नहीं है एम्बेसी वालों। But the letter is not publicly available. there's an other letter that he said कि ये देखें यहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन हुई है जिसमें उन्होंने ये बात की है। Wait, let me see within this. एजेंट है आपके अपने स्पीकर को के खिलाफ, आपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब असेंबली के अंदर दर्ज किया है, तो वो भी प्लीज एक्सप्लेन करें। वो भी अमेरिका का एजेंट है क्या? यू हैव नॉट एक्सप्लेन्ड दिट एट ऑल। मैं शुक्र करता हूं कि खान साहब ने कम से कम ये नहीं कहा कि हम असेंबलियों से इस्तीफा दे रहे हैं, मैं खुद भी इस्तीफा दे रहा हूं और सारे पीटीआई के लोग भी इस्तीफा दें। वैसे ये उनके लिए बेहतर ही है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देते तो बाई इलेक्शन हो जाता और वो फिर पार्लियामेंट से बाहर ही हो जाते। मगर इस वक्त जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई छोड़ के दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े हैं। मिसाल तौर पर एक खबर मुझे ये भी मिली कि परवेज खटक साहब, It's a 7-minute long thing, and I'll get copyright strike if I talk about it. So But that's fine. I like see when things are secret, everyone has opinions, हाँ, right? My opinion, your opinion, Taimur's opinion. There's everyone has. No one's seen what the letter is apart from like literally people on a handful of the National Security Council has seen it. Maybe the foreign minister and those guys have seen it. A few people who have selected top secret clearance have seen it. हाँ. They are the only one knows what it has. If the National Security Council is saying as a statement कि जो उनकी written आई कि they haven't said कि जी ये conspiracy है, agreed, no one said that, but if they've said कि यार this is
wrong language, undiplomatic language. This is tantamount to meddling in our internal affairs, and there should be a official protest, lodged by Pakistan's foreign office to the State Department. There must be something that they're officially protesting. I'm not saying, is it a conspiracy or not? Question is, maybe it's not a conspiracy, right? Maybe it was just some guy speaking because he was bored or upset. Let's just take that assumption. Okay. It was one man in the US State Department who was pissed off at Imran Khan or had his own agenda. Then Imran Khan's, by luck, it was given in that perfect moment कि उसके एक दिन बाद असल में एतमाद vote of no confidence आया था तो a little too coincidental, but चलो ठीक है, हमने मान लिया coincidentally हो भी गई बात. Yeah, maybe the guy saw what was happening and he's a diplomat, he looks at the South Asian region, so he understood कि ये possible, the only way out or the future is this thing, so he guessed it. Sure. But then there's also a 100-year history of America meddling and actually toppling governments left, right and center. Yeah. In our country as well. Yeah. And in our unless you cooperate in our neighborhood. And you lend Latin army America assistance. में तो I think 42 countries हैं जिनके उन्हें 42 दफा medal किया है. I mean, Confession of Economic Hitman पढ़ लो तो उसमें जो 2-3 को बड़े वो clear बताता है किस तरह से किया है. और तो अमेरिका की ये स्टेट पॉलिसी है वो करता रहे, वो क्यों नहीं करेगा इमरान खान को जब उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये तो नहीं कहेगा ओह व्हाट अ लीडर दे फाइनली हैव नाउ, अब मजा आएगा पाकिस्तानी से बात करने का. आई मीन इंसान की फितरत काफ़ी सिंपल होती है. वंस यू हैव पावर यू डोंट वांट टू गिव इट अप. Nations are built on human pyramids as well. The fitrah remains the same. So you're saying Imran Khan is power hungry? No, I'm saying America is powerful. It has dominance on some countries. That's true. It has, cordial relations with some countries. Where it has dominance, why would it want to suddenly have cordial relationships when it can dominate? What gives? I mean, we as individuals don't do that. We as groups don't do that. So we as a nation, why would we do that? Why would suddenly America be like, नहीं यार, अब ना हम पाकिस्तान को एक... So we're going to need some hardcore proof because otherwise it'll give rise to ये speculation कि आपकी conspiracy You'll never theories. get that proof. Never get that proof, ना? I mean... So then फिर हम इस तरह की conjecture की speculation की जिंदगी गुजारते हैं. politics हमारी सारी जिंदगी रही है. हमारी पूरी जिंदगी. हम लियाकत अली खान के कुछ नया नहीं है basically. लियाकत अली खान के मर्डर से लेके आज तक कौन सी किसी चीज का proof मिला है? Conjecture ही है. हद यार. I mean, भुट्टो कुछ कहता है. You don't seem as passionate as you used to be when we were kids, remember? No, I'm still very passionate. Like TV पे angry हो जाता है. I'm actually finding it's very interesting to see. Literally, I don't know if you ever seen that documentary that was made by those kids on Hugo Chavez and his overthrow and how he came back. No, I haven't. It's called The Revolution Will Not Be Televised. I think वो गाना है. Oh, अच्छा कमाल. मगर उसी टाइटल का उनने स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्री है कोई, आई थिंक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है जिन्होंने उस वक्त ह्यूगो शावेज नया कोई पॉपुलिस्ट लीडर इलेक्ट हुआ था साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने कॉलेज के लिए या पता नहीं किसके लिए ऐसी कोई यंग थे कोई बड़े कोई नॉन बंदे नहीं है, वो जाके हम उनसे कहा कि जी हम आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आपकी महाशख्सियत है, तो उसने कहा आ जाओ. तो आ जाओ के अंदर उनकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. उसी के अंदर इसी तरह से अपोजिशन जो थी वो पुराने जो स्टेटस को था वो अगेंस्ट था हुगो शावेज के. हुगो शावेज को आप अच्छा कहें बुरा कहें वो आपकी अपना ओपिनियन है. उसने नेशनलाइज किया, वो कहता है कि जी ये लोग एलीट कैप्चर वेरी सिमिलर टू व्हाट इमरान खान सेज कि जी एलीट कैप्चर हुआ है, वो कुछ गिनती के ख़ानदान हैं, वो ऑयल कंपनीज के अंदर हुए हैं, बाकी उन्हें अमेरिका के साथ पिट्ठू बने हुए हैं, वो अमेरिकन कंपनीज हैं, देर गट जोड़ हुआ है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्स को चूसे आ रहे हैं. उसने आगे कहा नहीं भाई गरीबों को बांटना चाहिए. अब सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, मतलब आई एम नॉट आर्ग्यूइंग दैट पार्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ही वेंट अगेंस्ट द स्टेटस को एंड ही वाज एन आउटसाइडर फ्रॉम द सिस्टम. ही डिड ट्राई टू डू अ कूल और नैरेटिव एक ही ट्रेडिशनल मीडिया ने एस्टैब्लिश किया हुआ था और आपको स्टूडेंट फिल्ममेकर चाहिए. जब वो अमेरिका के अगेंस्ट हो गया तो वो इविल हो गया. वो बंदा द मोस्ट इविल, लाइक फिडेल कैस्ट्रो इविल था, वो भी इविल है. मतलब कौन सी लीडर है इस दुनिया में जो अमेरिका के पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलता है और वो इविल नहीं होता? हाँ, अनलेस वो अमेरिका का टटा हो. I mean, ये एक simple question उठाना चाहिए कि यार why is it that if I disagree with the superpower, I'm suddenly evil? I just disagree with them. I don't agree. I'm not fighting them because they have the media and the backing and then the money to buy the politicians to. Sure. Then of course the conjecture then becomes again कि हाँ opposition को
उधर से बोरियां भर के पैसे आए हैं, तो इसलिए वो ये काम एग्जैक्टली और बोरियां भर के पैसे किस तरह से आते हैं, उनका पेपर ट्रेल कहाँ से आता है, कौन सी बोरियां भर के पैसे जब आते हैं डार्क उसका ट्रेल होता है, पेपर ट्रेल होता है मतलब सीरियसली सीरियलाइज तो होते हैं ना यार डॉलर्स फिर भी। हाँ तो शायद अमेरिका को पता होगा कौन से वाले डॉलर्स हमने बांटे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं पता लग सकता ना उसका। आई मीन बट अगर डिप्लोमेटिक बैग्स में पैसे आ रहे हैं कहीं से, अनलेस एफएमओसी जो है वो कहे कि हमने ये वाले प्रिंट किए हैं और वो पब्लिकली बताए कि ये वाले जो है, कोई पब्लिकली नहीं बताना, वो बता ही नहीं सकते। क्यों बताएंगे कि हम बोरियां दे रहे हैं किसी को। हाँ बोरियां भर के डॉलर्स आए थे ना अफगानिस्तान में। दिस इज द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल करेंसी, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन हैंड टू द अदर the transaction is not linked to the code of that currency. So yeah, and the ledger is almost, the ledger जो है वो but this also gives you freedom, because if everything was tracked and traced by the state, you would not be free. बंदा चार्ज कहाँ से लेगा? जो भी चीजें आपने करनी है जो आपके स्टेट रूल्स के अगेंस्ट है, जो आप पर्सनली कहते हैं यार, और स्टेट माफ भी कर देती है यार, इंडिविजुअल कैपेसिटी करते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो एक बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड रहे चीज़, तो यू नो वील गिव दैट मच फ्रीडम, दैट फ्रीडम इज टेकन अवे इफ एवरीथिंग इज ट्रैक्ड। या बट मैं कौन सी ऐसी चीज़ खरीदना चाहूँगा जो वाकई मुझे मसला और ट्रैक से, मेरे दिमाग में तो कुछ भी रिक्रिएशनल ड्रग्स तो पाकिस्तान में रिक्रिएशनल ड्रग्स ही हैं बस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। नहीं आई मीन आप जाके हैप्पी एंडिंग मसाज करा लें आप वो तो मेरे लीगली भी होते हैं, मैंने सुना है यहाँ पे खुला। लीगली नहीं हो सकते वो, अच्छा नाम नहीं लूंगा जगह का, लेकिन यहाँ पे हो रहे होंगे, कहते हैं मसाज है। आई मीन मैंने गलती से एक दिन मेरी पीठ में दर्द हुआ, मैंने गलती से गूगल मैप्स में मसाज सेंटर मसाज सर्च मारी, वो 5000 टक टक लाल डॉट्स में, कहा यार कराची में कितने कोई महसूस पाए जाते हैं, पता लगा कि वो मसाज पार्लर्स नहीं है। अच्छा वैसे यू नो आई हैव दिस नंबर ऑफ, नॉट दैट मैं कभी गया, मुझे किसी ने ये बेसिकली कहा कि डोंट गो देयर, डोंट बी स्टूपिड। हाँ मतलब क्योंकि कोई पता नहीं, आई हियर अगर आपसे वो पूछे भी ना दे, ये वाला आपने मैसेज सुना है? सर मेरी टाइमिंग दोपहर 1 बजे से लेके शाम 8 बजे तक होती है। लास्ट मीटिंग जो होती है वो मैं 7 बजे करती हूँ, ठीक है। 7 बजे जो आता है सिर्फ उससे मिलती हूँ, क्योंकि 8 बजे मैं ऑफ करके चली जाती हूँ, डे टाइमिंग है मेरी। तो आना आपने होता है मेन मार्केट गुलबर्ग शेजान बेकरी के पास। शेजान बेकरी के सामने ही है जोरा हाइट प्लाजा, उस प्लाजे के 3rd फ्लोर पे मेरा अपार्टमेंट है। जब भी आपने आना होगा ना, व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर है सेम नंबर है मेरा, मुझे सेल फोन पे कॉल करके फिर आप आएँ। और 6000 1 घंटे का होता है, इसमें 2 शॉट होते हैं, सकिंग फकिंग लिकिंग किसी सब कुछ होगी। मैं हैंडल नहीं करती और सकिंग के दौरान मुंह में डिस्चार्ज नहीं करवाती। वेरी प्रोफेशनल सर, चल रही है बिजनेस, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी स्ट्रेट अप, नोज द डूज एंड डोंट्स ऑफ 37 सेकंड के अंदर उसने अपनी पूरी सेल्स पे चाप के सामने रख दी। ये तो बेसिकली, बाकी आप आवाज से अंदाजा लगा ले कि आपको चेहरा क्या मिलेगा। आई मीन चेहरा तो कुछ वो शायद तस्वीर अलहदा भेजी गई हो शायद, या शायद लाइटें ऑफ हैं। बट रियली ट्रांजैक्शन जो 6000 रुपए हैं, ये अगर ट्रैक एंड ट्रेस हो रहे होते। ये मुझे किसी ने 4 साल पहले मैसेज भेजा था, तो खान साहब की गवर्नमेंट के बाद 12000 हो गया होगा। आई एम श्योर ये कॉस्ट, आई मीन आई एम अज्यूमिंग के वो कोरोना की वजह भी कह सकते हैं, इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस तो आया होगा। एंड I highly doubt that this rate is attached to the dollar particularly. Unless Philippe is giving that job. But I must say, any man who's able to give 2 shots in an hour, that must be young, youthful. Because anyone who's 50 plus is going to be popping pills to do that. Yeah, but what do you say जब लोग कहते हैं कि खान साहब की वजह से महंगाई होगी तो इसलिए निकालो? पागलों वाली बात है यार, कैसी बात कर रहे हैं? खान साहब की वजह से महंगाई होगी। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा खान साहब ने बड़ी कोई अच्छी हुकूमत चलाई है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी मसले मसाइल आए होंगे, बट आई मीन पिछले 3 साल हैव बीन आल्सो क्वाइट द रिडिकुलस टाइम दिस वर्ल्ड हैज सीन, एंड द करंट वेव ऑफ इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल थिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान साहब। अगर असल में सवाल उठाना तो पूछना चाहिए कि पिछले 30 सालों में हमें खुद मुख्तार मुल्क, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ फुलफिलिंग, फूड प्रोड्यूसिंग मुल्क से नॉट सेल्फ रिलायंट मुल्क किसने बनाया है? वो खान साहब ने नहीं बनाया। अब आप उसमें पिछले 30 साल में जो भी लीडर्स आए हैं उन सब का यू नो हैव अ पार्ट टू प्ले, देयर पॉलिसीज। सो द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज व्हाई हैज पाकिस्तान हु इज यू नो नोन फॉर द वीट प्रोडक्शन एंड ब्रेड बास्केट, और हमारा एग्रीकल्चर सारा कुछ है, और हम खाना सारा खुद, दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं, तेल भी इंपोर्ट हो रहा है, वीट भी इंपोर्ट हो रहा है, तो भाई
ये इमरान खान ने तो नहीं किया ना कि उसने आके कहा नहीं बस कर दो, हम सब इंडस्ट्री में काम करेंगे और खाना उगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी जिनने पॉलिसीज बनाई थी वो भुगत रहे हैं, और मे बी दे डिडंट इवन थिंक ऑफ द कोविड पैंडेमिक कमिंग एंड द वर्ल्ड गोइंग यू नो ऑल upside down. Sure, but the fact of the matter is you can't. We had 13% inflation, and what's like because COVID hit the world ना, तो अब उधर worldwide inflation अगर देखी जाए, I think Spain में बहुत crazy inflation I mean, अगर अमेरिका में 7% थी या पता नहीं 8% थी, ऐसी कोई नंबर मैं देख रहा था, मुझे याद नहीं exactly क्या था, but मुझे ये याद है कि Spain के अंदर 9.8% है, the highest it's been in 40 years. अमेरिका में देख ले कितनी है अमेरिका की inflation, okay. USA के तो कह रहा था economy is strong, तो this is how I made a little bit of money off of Bitcoin, क्योंकि if you trade news, you have to just check कि किस वक्त वो announce कर रहे हैं कि हम interest rate चढ़ा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, and you can actually bet on it big. And it's not only Bitcoin, it's on any commodity. Yeah. You're trading Because on, Nasdaq goes if you're up and trading on basically short-term trades are based on exactly this. Yeah. Futures, मैंने पहला अपना future का जो किया था 2x करके, which is quite scary for me. I mean, it is a scary thing because you're bound, law of probability says you're going to 7.5 end up losing the inflation money. rate in January 2022. अब 7.5 है, और देख ले कि 2 साल पहले क्या होता था इनका, या 3 साल पहले इनका इन्फ्लेशन रेट, या 4 साल पहले क्या होता है इनका। यूजुअली इन्फ्लेशन रेट 1-2% के दरमियान रहता था अमेरिका का। अच्छा, तो अगर 1-2% से वो 7 पे चला गया है, तो कोई 3 से लेके 7%, 7 टाइम्स का जंप आया है, 3x to 7x। तो हमारे यहाँ तो उतना नहीं आया। हमारा 12 हुआ है, हमारा कितना था पहले? हमारे 10-12% तो वैसे ही रहती थी हमारी इन्फ्लेशन। ले कौन सी हमारी इन्फ्लेशन कम होती है मुल्क में? ले तो असद कैसे ने अपने आप को बचा लिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, उसने कहा मैं तो निकलूँ इस सब से बाहर, आई एम डन, आई डिड माई ड्यू, आई डिड 24 आवर सर्विस, और एक्चुअली 12 आवर सर्विस, 14 आवर्स व्हाटएवर, एंड आई एम डन। मेरे में इतनी जूस फजलू अगर आ गया यार, क्रेजी सीन है। कोई नहीं, नेशनल गवर्नमेंट आएगी तो हम देख लेंगे भाई ये नेशनल गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करती है। पर आपका दिल टूटेगा थोड़ा सा यार। यस एंड नो, बिकॉज जो चीज़ इमरान खान करना चाहता है वो इस तरह से नहीं मिलेगा, उसके लिए एहतजाजी पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। यू नीड जेन्युइन पीपल सपोर्ट। आई मीन इफ यू बीइंग कॉल्ड सिलेक्टेड थ्रू आउट योर टर्म, that doesn't give you credence to show that I actually have people power and street power. Maybe if he comes now with the street power, then he'll be taken different. If he comes, maybe he'll not. Maybe he'll be put under some Tosha Khana case and blah blah blah, and have to deal with the politics of the 90s where एक दूसरे को जेल में आके फेंटी लगाई जाती है, तो वो भी हो सकता है। Who knows? Oh my God, मुझे कोई कह रहा था कि आप फांसी भी दे सकते हैं फॉर आइन की। हाँ, बट उसने पर्टिकुलरली उड़ाने पे वो आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट किसी को उड़ा चुकी है और फिर 20 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुडिशियल मर्डर कहलाया जाता है, तो आप फिर से उसको आई थिंक दे विल बी थिंकिंग ट्वाइस बिफोर डूइंग दैट अगेन। हाँ, this is the Bhutto thing you're talking about now. That's the only time when they did anything. I mean, I remember when this is not one of those, जब वापस आ रहे थे, this is not one of those things that you can do on a regular basis. Judicial murder. हाँ, that was Yalak's time and yeah, but they said कि वो जब परवेज मुशर्रफ याद है वापस जब आ रहा था अपनी कैंडिडेसी के लिए खड़ा होने के लिए कि मैं आज़ाद में उस तरह खड़ा होऊंगा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स civilian या तो तब भी कह रहे थे कि he'll have to come and face that. No, so he did and he was given the article, वो क्या कहते हैं, but they didn't hang him or anything. No, I mean, you can't hang retired certain thing you don't. You can't do it. It's called the brotherhood, my friend, and it's not just in that. Is he? Musharraf is still here, or did he shift out? No, he's sick in Dubai and genuinely looks sick. From the, he's really aged really fast, as one would put it. वो ये एकदम से ही होता है. It is all. Age एकदम से होती है आपके साथ. एक sickness आती है, does white बाल हो गए सब. नहीं, उसकी तो शक्ल से नजर आ रहा है कि बातचीत करने के तरीके से. It's not the Z kind of बीमारी के और the नवाज शरीफ kind of बीमारी के. अच्छा प्राइम मिनिस्टर चला गया, मैं सडनली नॉट बीमार एनीमोर. सारे बुखार उतर गया. I saw this documentary that Mo Naqvi, Pakistani international documentary filmmaker, had made won Emmys and ये वो बहुत established filmmaker है, and उसका नाम है इंशाल्लाह डेमोक्रेसी, and he follows परवेज मुशर्रफ around for like 3-4 years in it, and वो घर में खाना खा रहा है तो कह रहे हो यार जनरल मुशर्रफ खाना भी खाते हैं, like because you never seen him eat food, right?
And he's like, But you always see chicken him में मसाला सही नहीं with a glass of apple juice in his hand. No apple juice. That's very kosher. I was thinking होगा कुछ. No, I remember. but we've seen him on TV, on PTV in one function with a glass would it of... look like, yeah, absolutely. Look like and whiskey to me. He looks lush and he was enjoying his dancing on stage, man. General Musharraf was having a good time. Whiskey, because the crystal of the glass of recognizably a whiskey glass. The right kind of apple juice. I mean, it made me like him a little bit more for some reason. But in this case, he was like, घर पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, commenting on like the newspaper and making jokes out of people. And it just humanized him in such a way. It seemed like, oh, Uncle Musharraf. Uncle Musharraf. But I think that's why initially the country kind of was enamored by him as well, because he seemed like a very normal kind of guy. When he even came and like he spoke nonchalantly, he spoke his mind. You were like, oh, ये तो बंदा वो है, कोई पेपर निकाल के नहीं पढ़ने वाली कौम, which is kind of, you feel like a little bit कि यार we can't create a leader जो notes के बगैर बोल नहीं सकता किसी और leader सामने, which makes you feel a little less than kind of feeling. So yeah, but it's like वो कोई democratic process के through क्योंकि power में नहीं आए थे, and then like if you look at his whole term, like he probably had a lot more to do with creating the Taliban than even earlier when you go like at least making Taliban anti-Pakistan state actors. Sure, I mean he had a lot to do. But I think that statement of Imran Khan ke yaar you teach people that foreign occupation is worthy of jihad, and suddenly you teach them now foreign occupation because it's done by the US is not worthy of jihad, is a little difficult to digest. Yeah. And I mean that's commonsensical, right? I mean today you've been taught, I've been taught that democracy is lovely things. Tomorrow someone saying democracy is not a lovely thing, it will be a little difficult to digest. And is democracy a lovely thing? A lovely thing. I often question it. I'm like, exactly. Is it really? Who created this statement that democracy is the best? I mean, on commonsensically, yes, everyone having a right to say, and vote sounds like a good plan. Yeah. But philosophically sounds like a good plan, and realistically being applied the way it's being applied, is it really a good plan? I mean... What do you think is a good plan? You're clearly not, you're skeptical about it. Yeah, I mean, I'm not crazy about anything blindly. So democracy sounds like a great plan if done right, but in its current state with the horse trading and पैसा चलना in the way I just explained कि भी 40 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ लग रहे हैं एक इलेक्शन पे एक बंदे के, तो किस तरह से अगली 5 साल बाद फिर से वो 30 करोड़ पैसे स्पेंड करे, कौन है भाई, मतलब then तो you're either asking कि यार the elite industrialists who make that kind of money, and कितने होंगे पाकिस्तान में जो इतने पैसे बनाते हैं, वही sustainably हलाल तरीके से पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो फिर आपने एलीट कैप्चर कर दिया. आम आदमी किस तरह से कभी जो दर्द जानते हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी, एक और आर्ग्यूमेंट मेरी उस दिन हो रही थी हमारे दोस्त के साथ, नाम नहीं लेता, कि जी वो जो बाहर के वोट्स हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग राइट क्यों दे रहे हैं, नहीं उनको क्या पता पाकिस्तान के क्या मसले हैं. मेरे पास एक एक्सेप्शन रूल था, इफ दे पुट more than 50% of their income back into Pakistan and they can prove that, why the hell not? But why 50%? Why not 10%? Why 50%? 10 is not enough यार. Why? आधी से ज्यादा होनी चाहिए कि आपकी आधी से ज्यादा आपका दिल जो है वो आपका माली हाल. सेल्स टैक्स कितना है तुम्हारा इस मुल्क में? 18%, 16-17%. तो that should be the number. वो तो हर कोई बंदा देता है ना, इनकम टैक्स तो वैसे ही कोई कॉम में नहीं देता हमारे. सर्वाइव जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी गिनती के कुछ FMCGs और MNCs और उस तरह की कंपनीज. I said, why does that percentage sound good to you? What? I mean, I'm just saying, why 50%? The question is, what makes you say, why can't it be 18%? Because the way we tax ourselves is sales tax. That's what everyone pays. Income tax, only those who have to pay. Why everyone is the tax percentage got to do with your earning because power? If the company... No, the tax percentage... मैं तो कह रहा हूँ जितनी वो earn करते हैं उसका 50% डाले ना, so then it goes like they have a stake in the country. तो 18% डाल के भी stake ले लेना, because आप और मैं तो एक कॉम को अगर मैसिव उसके लिहाज से देखा जाए तो हम 18% ही सारी कॉम मिलके देती है जो सेल्स टैक्स है. इनकम टैक्स तो कोई देता है. बहुत लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो सारे पैसे कॉम को दें, मैं कह रहा हूँ वापस भेजें, अपनी माँ को भेज दें, जिसको भी भेज दें, वो यहाँ पे खर्चेंगी, हमारी पाकिस्तान में मईशत का हिस्सा बनेगा वो पैसा. तो हम पाकिस्तान में कितना पैसा डाल रहे हैं अपना? सारा ही डाल रहे हैं, यहीं बना रहे हैं, यहीं डाल रहे हैं. क्या है? नहीं,
बेशतर जो कमा रहे हैं वो उठा के बाहर भेज रहे हैं. अगर सारा का सारा पाकिस्तान में पैसा रह रहा होता, एज इन मैं की बात कर रहे हैं, तो मेरा तो सारा तो तेरा तो इधर ही होगा. मगर माय पॉइंट बीइंग इज के जनरली जो वेल्दी क्लास है वो it hedges itself, right? They're not going to put anyone who's made enough money will also buy some properties in Dubai, in America. You want to spread your wealth, diversify your portfolio. You hedging against risk. कि जी the country risk पाकिस्तान टर्मोल में जाता है तो मेरे जो wealth है जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है वो कहीं ना कहीं और जगहों पे सिक्योर पड़ी हो ताकि मेरे एकदम झटका ना पड़े. हाँ सही है. It's called diversification of assets. Everyone does it. Companies do it. Everyone does it. हाँ. तो जिसके पास है उतना कर सकता है तो करने की कोशिश करता है, चाहे वो जो भी हो. गलत बात नहीं है इसमें कोई. जिसने मेहनत से कमाया अच्छी बात है. मगर आप उनको जो बाहर बैठे हैं कह रहे हैं 50% क्यों भाई, 18% पे क्यों नहीं? ऑलरेडी वो $30 बिलियन भेज रहे हैं. योर बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स. मतलब आपने एक्सपोर्टर्स के लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको आप स्पेशल वो देते हैं इन योर बजट्स एंड ऑल के, यार प्रमोट एक्सपोर्ट. आप उनको टैक्स रिबेट दे रहे होते हैं, आप उनको बिजली दे रहे होते हैं. जब मुल्क में बिजली ना हो उनको दी जा रही होती है, गैस उनको दी जा रही होती है कि भाई तू बना तू बेच फॉरेन करेंसी. तो जो 30 बिलियन वो भेज रहे हैं जो हमारी सारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो उनको हम वोट नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? हाँ. और पहले भी हम वोट देते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स टेक्निकली तो हैं. वो जहाज पकड़ के आ जाए इलेक्शन से पहले वोट दे दें. हाँ. आप बेसिकली उनमें से अमीर वालों को हम वोट देते हैं जो जहाज पकड़ के आ सकते हैं. जो गरीब बेचारा मजदूर है और ड्राइवर है वो है उसको नहीं वोट देना. क्यों नहीं देना भाई? हाँ. अमेरिका में तो सारे अमेरिकनों को वोट मिलता है चाहे वो इधर पाकिस्तानी बैठा हो. या लेकिन आपको अगर वेस्टेड इंटरेस्ट ही नहीं, आप यहाँ पे रहते ही नहीं हो तो आपको इतना असर भी नहीं हो रहा, तो फिर आप क्यों एक वोटिंग पावर किसी को? Why do you think उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे? वो कौन से शौक से गए हैं यहाँ? फिर उनका इंटरेस्ट ये बन जाता है ना कि पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम हो जिससे मेरी फैमिली का यहाँ से निकलना आसान हो जाए. तो assumption ये है कि भाई who are the expats? When you say 90 lakhs 9 मिलियन 1 करोड़ जितने भी हैं वो एक्सपर्ट्स, वो कौन है? मेजॉरिटी कौन है उनमें से? मेजॉरिटी तेरे जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं. 90 मिलियन नहीं. मेजॉरिटी मजदूर कौम है जो मिडल ईस्ट को बना रही है. ड्राइवर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, यू नो मेजॉरिटी तो वो बैठती है कौम. तो वो यूएई में सेटल नहीं करने गई, वो सर्वाइव करने गई है. बिकॉज पाकिस्तान को सर्वाइवेबिलिटी नहीं दे रहा तो वो सर्वाइव करने जाते हैं. वो अजीब किस्म की मुश्किल हालात में रहते हैं वहाँ पे. वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द काइंड ऑफ. पासपोर्ट भी ले लेते हैं उनसे. और पासपोर्ट ले लिया, वो एक कमरे में 40 बंदा सो रहा है, एक बाथरूम है उस 40 बंदे का. दे नॉट लिविंग द लाइफ इन दुबई. इट्स नॉट द JBR लाइफ, मरीना बे लाइफ दैट यू नो वी ऑल माइट गो एंड सी एंड एक्सपीरियंस इन दुबई. दे हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ इन दुबई एंड दे हैव अ एक्सपायरी डेट. दे आर कमिंग बैक. दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग टू कम बैक टू बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी. Why do you think they don't have a stake in Pakistan? They want Pakistan to be a place. Wouldn't they want to stay with their families? That's an extraordinary condition. Not all expats are in that condition, no? Not all, but I would particularly I would Dubai argue, mein log. I would argue that most are. So anybody who has a passport other than the Pakistani passport, then they shouldn't be allowed to vote. Sure, but a whole lot of your bureaucracy is full of that. Should they be kicked out of bureaucracy? And they're living abroad. How about that? But हमारे bureaucrats जो बेशतर होते हैं वो जैसे ही रिटायर होते हैं उठ के बाहर कनाडा सिटीजनशिप. उसके बाद वोटिंग खत्म आपके लिए. उसके बाद वोटिंग क्यों खत्म? दैट मीन्स उनका सारा प्लान ही था भाई मुल्क से बाहर भागने. उन्होंने तो सारे जैसे कमाओ उधर जाके रिटायरमेंट लो. तो फिर वो कौन से मुल्क के लिए बेहतर काम करेंगे? वो तो मेजॉरिटी नहीं मैं कह रहा. आई एम नॉट गोइंग टू जनरलाइज के मेजर, बट देयर इज अ रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल हु डू दैट. सो शुड वी क्वेश्चन दैट? स्टार्ट क्वेश्चनिंग दीज थिंग्स कॉन्स्टेंटली कि जी ये यूं कर रहे भाई. पाकिस्तानी है, पासपोर्ट है, ID कार्ड है, वोटिंग राइट है, बस. That's his God-given right. ये that's the way Americans do it, right? अच्छा, okay, so they're saying कि नहीं इजाजत देनी चाहिए. Because और या है ही नहीं अभी सही. नहीं अब इसने तो दी है. मतलब इसने तो इलेक्शन कमीशन को फोर्स कर दिया कर रहा है. Living in Germany, I could come here and vote and go back. You could come here and vote because your vote exists here, but there was no channel or mechanism for you to vote from Germany for this seat that you have a vote for. So they want to create that mechanism. Is that what it is? They've already supposedly created that mechanism, and that's why they went for this. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. I think so, but everyone also knows that because he's created this mechanism, the majority of that number of votes should come to the PTI, which leaves everyone else who's in the political saying we don't want this vote to come in. तो फिर बेहतर है कि वो उन एक्सपर्ट्स को गद्दार कह दिया जाए और उनको रद्द कर दो. I mean गद्दार कहो या ना कहो, उनसे कहो उनको पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, उनको पाकिस्तान के बारे में दर्द दिल नहीं है. हाँ. उनके $30 बिलियन ना आए तो पाकिस्तान का दवालिया बन जाए आज तो मतलब ये अजीब बात है कि भाई
पैसे भेजते रहो, मुल्क उसी पे चलेगा, डॉलर्स उसी पे, हम अपने आप को करंट अकाउंट को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है. इट ओनली गेट्स समवॉट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मनी कमिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. Okay, so they're buying your oil for you. Their dollars are buying their oil for you, not the exports that the Pakistani com, which is working really hard to produce goods, are. No, that's not it. We're not being able to. We're living way beyond our means, and those guys are literally subsidizing it. Yeah. So give them the right to vote for sure. I believe so. I think every Pakistani should have a right to vote if you really want democracy. Unless you got a NICOP, then you could go to hell. No, even if you have an ICOP. What's a NICOP though? Like it's non-resident non-residents को कोई लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है. अमेरिका में तो वही सबको देते हैं, और इंग्लैंड में भी एक्चुअली होता है, बट उनका 15 साल का रूल है कि भाई अमेरिका में क्या ग्रीन कार्ड भी है तो फिर भी वोट है? ग्रीन कार्ड पे आई थिंक वोट नहीं होता. मतलब सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड नॉट सिटीजन, इट्स अ पाथवे टू सिटीजनशिप. सो वंस यू आर सिटीजन फुल, जो आपने ओथ शोध ले ली, यू नो, फ्लैग को एलिजेंस दे दी, उसके बाद आप वोट कर सकते हैं. और आप चाहे पाकिस्तान में बैठे जितने भी अमेरिकन हैं वो सब मेल इन वोट्स कर सकते हैं अपने. अब उनकी स्टेट्स में थोड़ी कुछ ऊंच नीच हो सकती है, बट जनरली सारे अमेरिकनों को वोट करने का वो होता है. तो मेरा बॉस था एक, वो पाकिस्तानी है, बट मतलब अमेरिकन पाकिस्तानी वो वोट करता है मेल इन. तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो ये अब नहीं पास हुआ. खैर पास हो गया. आई थिंक वन ऑफ द कंस्पिरेसीज इज कि जी जो नहीं, द ऑल द ऑपोजिशन वांट्स टू कम इन एंड change this. They want, because Imran Khan put this into the law, they want to undo this, and they want things to go back to the way they were, the elections to happen clean, the way they have been happening clean, which every party said कि clean नहीं है, but they want it that way. That's better than this way. Okay, let's see who wins, what happens. I mean, did you hear that Elon Musk has bought 3% of Twitter? Really? Yeah. No, I don't know. Yeah, he just bought, like, he's now in the board of directors. Interesting. So he gets to make and वो अब उस तरह की चीज़ें कर रहा है कि एडिट बटन क्रिएट कर रहा है ट्विटर के ऊपर, और वो क्योंकि एंटी सेंसरशिप है तो वो पता नहीं कुछ और भी आगे पीछे खेलेगा. बट एक अजीब सा मसला है कि लाइक सोशल मीडिया की रेगुलेशन के अंदर कि अगर आप जाके सेक्सुअल हरासमेंट प्रमोट करना शुरू करते हैं, लेट्स से यू रिमेंबर देयर इज दिस गुलूलाई केस वेयर शी वाज उसको कहा था तौहीन रसालत के तौर पे ना, दिस गाय हु स्टार्टेड सेइंग कि इसने तौहीन की है. And then he started saying, "Isko maro," and then he started making videos all the time. This one person basically went. This one person, he started saying, "Isko maro, isko maro, isko maro." Now social media is like, Twitter is very aggressive कि वो delete भी कर देती है, आपका account भी delete कर देती है, आपको ban भी कर देती है, shadow ban भी कर देते हैं. आपको लगता है कि आप tweet कर रहे हैं, लोगों को नज़र आ रही, किसी को नहीं नज़र आ रही होती. Instagram भी ऐसे करती है. Instagram के ऊपर अगर आप लेट्स से अगर अमेरिका किसी इंसान को फैशिस्ट लीडर समझती है या एंटी अमेरिका समझती है किसी मूवमेंट को, और आप उसकी प्रमोशन में कोई ट्वीट मारते हैं, आपका ब्लू टिक गायब हो जाता है और फिर आपकी रीच भी एकदम से कम हो जाती है. सो यू डोंट शो अप इन द फीड एज मच एनी मोर. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो, बट लाइक Elon Musk is pro like showing everyone everything. So, but I mean, at 3%, even if he's board director, he can't really control the board. He can suggest things, but I mean, board. How would you need? 3 is like he's the largest shareholder right now. It doesn't matter. He's larger than Jack Dorsey. A board seat gives you a vote, maybe 2 votes, depending on what kind of agreement it is. But I mean, depending on how many people there are on the board, and I'm assuming Twitter has a reasonable size board by now. He would have a certain sway. But he's not a king of Twitter के बस आज से ये कर दो, जैसा वो बाकी अपनी कंपनीज में he remains quite, you know, powerful. यार वो insane बंदा है. There's this beautiful podcast cause like most revolutionary type, like I mean Edison से कभी compare कर सकते हो, although he'd rather be compared to Tesla, that's why I called the company Tesla. Sure. But Tesla was not as successful a businessman or an entrepreneur as he is. Yeah, because I mean, he wasn't much of a businessman, was he? He was at all. वो एडिसन था. एडिसन था वो तो किसी लोगों की चीजें चोरी भी करके पैसे बना लेता था. So, but Elon Musk is the other way around in that he's called his company Tesla, but he's a great entrepreneur at the same time. Yeah. So he has this interview with Lex Friedman, and they talk about how they created the neural networks to map the cars like autopilot system, जिसमें
एक सारे स्पेस जो में डेटा आ रहा है उसको सारे कुछ वेक्टर्स देख बन रहे हैं। रहे हैं और वेक्टर्स कंप्यूट हो रहे हैं कि वेक्टर की क्या वेलोसिटी जा रही है और फिर उसके हिसाब से आपके सेफ्टी प्रोसीजर्स भी चल रहे हैं एंड देयर 6 कैमरास दैट आर नॉट recording, they're recording photons, they're not recording images, so they're converting all of that information at the same time to give you real time, and they're trying to figure out judder kis tarah khatam karte hain, because you'll see a car going like, and then it'll do this and then it'll go like that, you know. So in detail, aur upar se saath mein like the guy who's chief engineer of SpaceX at the same time, it's insane how much information he just gives away, like just talking. ऐसे नहीं लग रहा कि वो छुपा रहा है कुछ. अब टीम एप्पल वो कभी बैठ के बताते हैं हम क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं. he realizes कि वो लोग जो काम कर रहे हैं दुनिया में वो बता भी दे लोगों को, तो not too many people will be jumping onto this because it requires a certain amount of, well, intellect तो अपनी जगह, but also a team, certain amount of, you know, framework, structure, business acumen, credence as a person as well, कि यार are people willing to support you in your ideas. I mean आज कल ही मैं बल्कि वो Netflix पे आई हुई है Return to Space, SpaceX की डॉक्यूमेंट्री ओह नाइस, मैंने देखी. मैंने खैर पूरी नहीं की, 2 घंटे की. अब I saw bits of it, पर उसमें ये था भाई Falcon जो पहला उनका रॉकेट, not the landing जो 2 back, सेकंड में उड़ गया था, जो पहला उन्हें बस रॉकेट स्पेस तक पहुंचाना था और ऑर्बिट में लेके जाना था, वो उन्होंने कहा भाई मेरे पास अपनी जेब से मैं फंड कर रहा हूँ, $100 मिलियन हैं, पता नहीं कितने हैं, मैं 3 स्पेस फ्लाइट्स को फंड कर सकता हूँ. दैट वाज द डील एंड ही गॉट अ टीम टुगेदर टू बिल्ड इट. वो 3 हो गई, तीनों की तीनों फट गई. अब बट देन ही वेंट डबल इट. ठीक, अच्छा मेरे जो पर्सनल मैंने साइड पे पैसे रखे थे अपनी रेनी डे फंड में, उसको भी डाल लूँ चौथी फ्लाइट के लिए, या चौथी या 5वीं फ्लाइट, 2 जो भी, चौथी या 5वीं फ्लाइट में वो पहुंच गया ऑर्बिट. एंड जैसे ही वो पहुंचा, नासा ने कहा $1.5 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हम आपको, यू गाइस आर गोइंग टू बी आवर पीपल गोइंग टू शिप. क्या बात. सो दे, अब वो ना 2 चलती तो अभी खत्म हो चुका था टेस्ला. आई मीन, so he says that himself कि, you know, if there is any superpower one should wish for, it's luck. That's, you know, but it's clearly a certain amount of determination and devotion and बार लगातार एक चीज करते रहना. things in a very detail oriented, not superficial way, going into it. Absolutely. I mean, that guy is eccentric, and I mean, he himself, Asperger's is something that he claims that he has. Oh, he does? So, Okay, yeah, so I mean, so those kind of eccentric brains look at the world in a different manner than the neurotypical mind would. Yeah. And he's one of those that... Well, remember that guy Howard Hawks? Howard Hughes. Yeah. वो जिसके ऊपर लियोनार्डो डिकैप्रियो की भी दी एविएटर बनी हुई है. एंड वो भी बड़ा उसको कोई ADD नहीं थी, OCD था, और इंटेंस फॉर्म ऑफ OCD. बार बार हाथ धोया जा रहा था. बट ही इन्वेंटेड लाइक दीज massive airplanes that he would fly, and he made like some of the top grossing films. He made some very successful films, but none of his passenger airplanes were ever commercially successful. Yeah, because they were so outlandishly crazy ideas, and maybe way beyond the time. कहते हैं ना कि some people have ideas which are too beyond. Like Tesla के बारे में ये कहते हैं ना, जो कि भाई ideas बड़े अच्छे थे उसके, मगर there is beyond free electricity. क्यों कोई बनाएगा, मतलब बिजनेस क्या है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज द बिजनेस इन फ्री. ही वांटेड टू गिव द वर्ल्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी. अब वो कर सकता है, नहीं कर सकता, साइंस क्या कहती है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मगर उसकी ड्रीम वाज टू गिव एवरीवन फ्री एक्सेस. आई गेस ही विंस इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो हम यूज करते ही हैं लॉन्ग डिस्टेंस और भी बहुत चीजों के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स एटसेट्रा. दैट्स फाइन, वी आर यूजिंग हिज टेक्नोलॉजी इन बिट्स एंड पीसेस, बट हिज ड्रीम वाजंट टू यूज द टेक्नोलॉजी इन बिट्स एंड पीसेस. हिज ड्रीम वाज टू गिव एवरीवन फ्री एनर्जी. That is why he wanted to create that वो and transmit it through the earth and blah blah blah. वो चीज़ possible है या नहीं है, वो एक और argument है. I'm sure कोई साइंस कहती है कि नहीं होगी possible. ड्रीम ही थी, okay, I'm not saying कि है, but सोच एक वो थी ना, as he didn't want to make money, he wanted to give humanity. वो उस तरह का सोच थी, सही थी गलत थी, वो different kind of mind होता है. Elon Musk का लगता है फर्क है, वो बिटकॉइन में भी घुसा हुआ है, and he started the thing that he did PayPal ना, ये बड़ी गेम है उसकी, because then he understands money or banking from the beginning of it, and then hence finance and all of that. His dream is to take humanity outside the earth and make it grow as a species, right? And that's a massive dream to have, frankly speaking.
But any practical, and he seems like a practical person, that's why he's achieved what he's, मतलब जिस चीज़ में घुसता है वो अचीव कर लेता है, तो प्रैक्टिकल तो होगा. तो प्रैक्टिकली तो इस तरह की ड्रीम करने के लिए बहुत पैसा चाहिए. तो बहुत पैसा बनाओगे तो बहुत पैसा इस्तेमाल करोगे उस चीज़ में. तो वही कर रहा है. मतलब उसका फोकस तो काफ़ी फिक्स्ड है कि जी मैंने पहुंचाना है लोगों को वहाँ पे. अब वो सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकता. ही इज गोना मेक मनी समहाउ टू बिल्ड टू दैट ड्रीम. सो ओके, I think that. So you need both those components, na, basically. And I guess PayPal gave him that. I'm sure he's lived a life and he says that himself with PayPal के अंदर ज़मीनों सो रहा था, ऑफिस में सो रहा था, मतलब गुर्बत वाली स्टार्टअप वाली जिंदगी गुजार चुका है. Yeah. तो he knows कि यार he must have had those dreams when he was that poor as well. It's not like he suddenly became rich and started dreaming big. He must have been dreaming big before he was rich. But he recognized that the moment he sold PayPal and got that money, he was actually able to do a lot more to achieve his dreams that are much larger than being the richest man on earth kind of dreams. So, interesting. I mean, I think the reason why people follow him is because his general look-wise, it looks like his dream is larger than just being rich or being successful in business. But he includes like forward-thinking ideas. I don't know, forward-thinking कहना भी चाहिए इन चीज़ों को कि नहीं, लेकिन like उसका पहला बच्चा पैदा हुआ और उसको कोई जेनेटिक डिजीज़ थी तो वो मर गया. अच्छा. और ये विकिपीडिया में है कि उसके बाद से सारे उसके IVF बच्चे हैं. And there's triplets and twins in there somewhere. Twins or triplets, one of the two. But they were through IVF. And because of that, अच्छा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया IVF का क्या सीन होता है. And also read this book called Hacking Darwin. Okay. Beautiful book. मतलब कि कहाँ जा रही है, हम किस तरह reproduce करेंगे future के अंदर, और how there's this one chapter is like the end of sex. It's called the end of sex. Because sex will become recreational. Okay? And आप सेक्स के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी अगली नस्ल पैदा करनी है तो ज़्यादा जिम्मेदाराना तरीका यही समझा जाएगा कि भाईजान हॉस्पिटल जाएं, IVF में जाएं और कपों के अंदर अपनी चीज़ें छोड़ें और फिर बेस्ट स्पेसिमेन सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ट एग के साथ और फिर करके फिर आपकी बॉडी में डाल देंगे. लेकिन एनी अदर वे कि लेट्स से आपने हफ्ते में 3 दफ़ा मोट मार ली है और आपके सबसे गंदे वाले स्पर्म सेल आपके उधर फिर रहे हैं और आप तब इम्प्रेग्नेट कर दो गलती से. सही है. तो रशियन नहीं है, रशियन रूले खेल रहे हैं. रशियन रूले खेल रहे हैं. तो आइडिया ये है कि भाई कंट्रोल कर दें ताकि बेस्ट स्पेसिमेन से बेस्ट कॉम बन जाए. हाँ. और इसका मतलब यूजुअली आई टेल वुमेन गेट ऑफेंडेड बाय दिस थॉट फॉर सम रीजन. नेचुरल नहीं है ना. दे गेट ऑफेंडेड कि इस तरह से नहीं करना चाहिए. इस तरह से नहीं करना चाहिए, नेचुरल तरीके से होना चाहिए. आर दे इक्वली ऑफेंडेड जब वो सिजेरियन बर्थ्स होती हैं? हाँ. अब मतलब ये यही बात है. तो ये something I found out कि supposedly Canada, England वगैरह फिर तो इस तरह तो आप जंगल में जाके बच्चा पैदा करो. नेचुरल तरीका तो यही है. Canada, England वगैरह में आप by choice सिजेरियन नहीं करा सकते. अच्छा. That's what I heard. I mean, मेरा कोई बच्चा नहीं है इसलिए we'll find out. I mean, find out. Which is news for me as well. But it was basically because there's social वो ना free healthcare system. तो उधर होता है सिजेरियन अगर medical requirement हो कि बच्चे की जान, माँ की जान, या कोई complication है इस तरह की, तो बट नॉट बिकॉज मुझे दर्द नहीं करना. आई डोंट वांट टू गो थ्रू द चोर ऑफ चाइल्ड बर्थ, सो आई रादर चूज टू गो सिजेरियन. Because of the risks of C-section, the Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada recommend that planned C-sections generally be done only for medical reasons. So this is just a recommendation, man. But some women and their partners have personal reasons for wanting to avoid labor and vaginal birth. It's personal choice. I'm not saying. I mean, I am no one to say anything about this personally. I'm a cesarean. But the question remains that the same people who find this offensive, do they find that offensive? If they do, good for them. If they don't, kind of hypocritical. Yeah. I mean, I don't find either of them. It's a personal choice. I think people should be allowed to do whatever they want. Yeah, and plus, like, I mean, it's वो ये भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा ना. Like, it's Elon Musk के केस में, it's that exact reason why लोग कहेंगे कि यार इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको डिजीज़ेज़, आपको जेनेटिक डिजीज़ेज़ अवॉइड करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होगा. कि अगर आप एक स्पर्म को देख के उसके अंदर से उसकी जीन को सीक्वेंस करके फिगर आउट कर सकते हो कि इसके अंदर डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, क्योंकि दैट जीन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. तो अगर डाउन सिंड्रोम आपने अवॉइड करना है अपने बच्चे के अंदर, क्योंकि उसके बाद तो बहुत मुश्किल होता है रेजिंग अ डाउन सिंड्रोम किड. सो इफ़ यू कैन सेलेक्ट एट द स्पर्म लेवल कि ये नहीं मुझे चाहिए बच्चा जिसको ये सिंड्रोम होगा,
then why would you not want to make that selection? Sure. I mean, So that's where it starts. I think logic for it exists. है ना? Others who say कि यार, one shouldn't tamper with nature and let nature take its course also have a point of view. I mean, I don't think this is personal choice, frankly speaking. हाँ, जिस दिन स्टेट ने मैंडेट करना शुरू कर दिया कि अब सारे बच्चे इन विट्रो होंगे, उस दिन भी इशू है. उस दिन भी और अगर स्टेट ने मैंडेट करना शुरू किया सारे बच्चे इन विट्रो नहीं हो सकते या कोई बच्चा इन विट्रो नहीं हो सकता, वो भी इशू है. मतलब आई थिंक इस तरह की चीजें इन्फोर्स ना की जाए, लोगों पे छोड़ दें. भाई तेरा शौक है, तेरा शौक है कि तू चाहता है कि भाई तेरा लैब में आईवीएफ लैब में मुझे मेरा बच्चा स्पर्म सेल से खेल रहा था, मेरा बच्चा छोटू भी हो सकता है बिकॉज मेरी हाइट बाद में निकली थी, बट शायद मेरी हाइट मतलब वो कोई बच्चे को गलत वाला स्पर्म मिल गया, मेरा छोटा रह जाएगा तो उसको बुली करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा बड़ा ही हो तो मैं ओके. हाँ, लेकिन इसमें एक वो चीज़ अजीब हो जाती है ना कि अ लॉट ऑफ म्यूटेशन, रैंडम म्यूटेशन वाला जो आइडिया है कि आप अगर एस्टिमेट करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है तो कई दफ़ा अच्छी चीज़ निकलती है रैंडम म्यूटेशन से, तो आप वो फिर उसकी अलाउंस रोक रहे हैं वहाँ पे. एग्जैक्टली. कि वो जो I mean, I'm not going to say it. This is pretty messed up. But I'll say, let me see. If I can say it in a way that doesn't offend any disabled person. This already sounds like you're about to offend many of you. I mean, like, if differently, you can choose, differently like, able. I'll disable myself in this situation. Differently able. कद वाली जो तूने बात की थी. Differently able. अब मेरा जब कद कम होता था, तो मुझे अगर पता हो कि अगर माँ बाप जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू कम से कम वो स्पर्म सेलेक्ट करते जिसका कद ज़्यादा निकलना है या जिसके शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड होने हैं, whatever I have issues with. तो wouldn't it be nicer to kind of go that route? अब सवाल ये है कि तू जो बना as a person with the grit you have, the determination you have to whatever you do, you have that. Did being short for a period of your life play a part in creating that personality of yours? Probably, right? You had, because you were short, you had to fight against